ये मेमोरी मेरे सिस्टम में कहाँ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सोसाइटी की बात करूँ तो गार्ड विल एक्ट एज अ पॉइंटर कि अगर आप ए ब्लॉक में जा रहे हो तो ए ब्लॉक में 5th घर इस साइड है, तो वो एड्रेस जो बता रहा है ना वो है पॉइंटर। एंड एक के बाद एक जो घर एक साथ है लोकेटेड है, दैट इज नथिंग बट एन एरे ऑफ एड्रेसेस ऑफ डिफरेंट पीपल. Okay, so that is the example that I wanted to give you to explain the concept. Okay. Okay, so even if it's not in the syllabus, I think concept clear hona zaruri hota hai. Okay, I'll take the doubts later. First, let me start with uh, the basics of what I wish to discuss with you guys. So all of you are first semester students, is it? Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. All right, perfect. So I'm going to start with what programming actually is. Okay, so I've curated a few slides from some question paper that I received, and I thought that let me just discuss a few things with you. So when we talk about C programming is nothing but a language of computer which helps me to create some kind of logic and run this logic in my system to perform operations. जब मैं बात करूँ, if I talk about my programming console, that is something that is a variable, and this is an online compiler that I'm using, which is used to execute my program. Okay, when I start my program, it starts with something called a hash. Okay, hash is nothing but a preprocessor directive. तो अब मैं कुछ भी अगर प्रोग्राम लिखूंगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे प्रोसेसर चाहिए, राइट? एंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डज नथिंग बट अलाउज मी टू इंक्लूड हेडर फाइल्स. जब भी मैं कोई लैंग्वेज के बारे में बात करती हूँ, लैंग्वेज में होते हैं वर्ड्स और हर वर्ड का होता है मीनिंग. ठीक है, तो ये जो लाइब्रेरी या ये जो हेडर फाइल है ना, इसके अंदर जो भी हम फंक्शंस यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम में उनकी मतलब होते हैं. सो आई हैव टू इंक्लूड दिस डिक्शनरी सो दैट द सिस्टम नोज कि मैं किसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, सबसे पहले आता है मेरा मेन. मेन क्या होता है? मेरा मेन एक वो एरिया है जहां मैं जो भी लिखूंगी वो एग्जीक्यूट होगा मेरे प्रोसेसर से. ठीक है, सो इफ आई एम जस्ट राइटिंग अ प्रिंट कमांड व्हिच सेज hello, so what exactly this is? printf is nothing but an output statement. printf के आगे मैं जो भी डबल कोट्स में लिखती हूँ that gets executed and printed to the screen as it is. ठीक है, when I run this I get an output which says hello, right? Now what else I can do here? I can perform algebraic information like a plus b equal to c, and I can do many other things. Now let's take an example of this program. Okay, let me just copy it for you. Now let me know if you guys know or you can predict what can be the output of this. ठीक है, हमने integers लिए हैं 3. Okay, 3 variables लिए हैं integer type के. So variable is nothing but any data holder whose value can change. ठीक है, वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज होती है. वेरिएबल इट्स अ लिटरल मीनिंग ऑफ इंग्लिश दैट सेज द वैल्यू इज एवर चेंजिंग. तो इधर मैंने आई की 5 डाली है, मैं आई की 4 भी डाल सकती हूँ. इट इज एब्सोल्युटली ऑन टू मी. Okay, later also in the program I can change the values as I wish once it is not globally defined. Okay, now this is globally defined. मैंने एक बार अगर एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया at the beginning of my program, then it is globally defined as I has a value called 4. Okay, फिर मेरे पास एक और वेरिएबल है j और z. इंटीजर टाइप के इस वजह से ये नंबर्स लेते हैं. ओके, z की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज नहीं की, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. मुझे इनिशियलाइज नहीं करना, मुझे उसको कोई वैल्यू इनिशियली नहीं देनी. ओके, देन आई हैव अ स्टेटमेंट व्हिच प्रिंट्स i प्लस 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 j. अच्छा, प्लस तो हमने देखा था, ये प्लस 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 क्या कर रहा है? ओके, लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स. कैन एनीवन in the comment section write the answer to this particular program?
Can you predict क्या आंसर हो सकता है? Just like a small prediction, if anyone could. Do we have the comment section working? Okay, even if no one is ready to answer this, let me just execute it and tell you what exactly is the result. So when I have redundant operators of the same kind, then it performs the same operation. Let me just add another plus and see what happens. Okay, so now what it's saying is that there is a compilation error. So what is the maximum number of operators I can add so that the result becomes the same? All right, here also it is coming an error. Let's see how this works. Okay, so why is it that I am unable to work it with a double plus and I'm able to work it with three plus signs? Can anyone tell me this? See, it works absolutely fine with 3, and as soon as I make it 2, it does not execute. It says it's an error. Because I plus plus is anyways an increment operator. Okay, when we talk about C language, there are certain operators that are already there and they are already being used. Okay, so if I am talking about an operator, I cannot perform an operation along with an operator, right? अब जैसे हम बात करते हैं अपने you know if we talk about say simple operators like arithmetic, so plus is nothing but an addition operator. Okay, subtract, it is a subtraction. Then we have multiply, division, and modulus. Now you look at the rightmost side, it says C arithmetic operations. Now all these screenshots are from a website whose online compiler I'm using, and you can access the website. It has a lot of content related to this subject also. Okay, then we have something called logical operators. Logical operators perform logical actions like and so if we have a condition, so if we need a program to work on condition based, like if a student has got 90% and above and has minimum attendance of 70%, then the student is A grade. ठीक है, तो मैंने एक एंड ऑपरेशन लगाया है, मतलब उस स्टूडेंट के 95% भी आने चाहिए और अबव, या फिर उसकी एंड उसके जो अटेंडेंस है 75% अबव होनी चाहिए. अगर ये दोनों ट्रू हुए तो मेरे को उसको ए ग्रेड देना है. ओके, इफ ईदर ऑफ देम इज फॉल्स देन आई विल नॉट गिव इट ए ग्रेड. ठीक है, ओके. Now you see and operator बोलता है that and ampersand दो signs है. It says that it is true only when all the operands are true. मैंने क्या बोला, दोनों conditions true होनी चाहिए. ठीक है, और operator कहता है कि even if one condition is true, I can give it true. Okay, and not क्या करता है, बिल्कुल उसका उल्टा. So zero का उल्टा क्या होता है? Can anyone tell me zero का उल्टा क्या होता है? Okay, I understand you guys are on mute. You can't interact. But my classes are mostly interactive. So you can write in the comment box if anyone knows what is the negation of zero. Anyone? People, you can now unmute. You have been given the permission. You can unmute and answer. Yeah, but only do it when I ask you to. Okay? So anyone who knows what is the negation of zero? Ma'am, 1. Perfect. Yeah. So it is completely opposite of what I am aiming for, right? That is my not operator. Then coming to other operators like relational operator, it performs an equivalence operation. So I can say यार equal to एक single भी तो है. Why do I have to have two equal to? Because एक single equal to assignment operator होता है. Okay, it assigns value to something. मैंने अभी प्रोग्राम में क्या देखा था, I am assigning a value to I which is 4. ठीक है, if I say I equal to 4, then I'm checking whether I and 4 they both are equal. Okay, so that is an equality operator. Double equal to and single equal to is a assignment operator. So these are various operators. Now you will say कि operators exactly होते क्या है? So there are a lot of operations when it comes to programs, right? Even if we talk about the current AI programs, they have a lot of operations going on.
and operators are used. For example, अगर हम बात करें weather department, we have a program for weather department to predict rain. So we will say if the weather is cloudy and it is windy, then it will rain. ठीक है, एंड का मतलब अगर क्लाउडी और विंडी दोनों है तो बारिश होगी. सो दैट इज नथिंग बट अ प्रिडिक्शन एल्गोरिथम दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर द वेदर. So you see how operators are used everywhere. Okay, now coming to the basic programming that I told you about. So programming allows me to perform various operations. We've already done this right side program. The left program is of Armstrong number. This was a question in one of your papers, I think, mid-semester. So they can ask you anything. You know, they can ask you what's a prime number, what's an Armstrong number, what's a Fibonacci series. So these are set programs that you should know about. Okay, now because the session is short and I'm here to just give you a brief description about what programming is, and it's just like an introductory session, so I can't like get into the in-depth of it, but these are the programs that you should know about. Okay, these are set programs. So when we talk about, or a palindrome, things like that. Okay, an Armstrong number is nothing but if we have a number called 153. Now, if we add the sum of all its single digit cubes, so 1 cube plus 5 cube plus 3 cube, if it gives me resultant as 153, then it is an Armstrong number. Okay, so that's the concept that goes into an Armstrong number. So we have simple program that has initially, you look at line number 4, we have just declared a few variables and initialized sum to 0. Then we are taking a number from the user, any number like 153 is a number. So I'm taking this number from the user. Printf, it allows you to print something to the output screen. Scanf, on the other hand, takes input from the user and just communicates it to the system. So scanf में क्या हुआ? %d क्या कर रहा है? It is taking a number, an integer kind of a number n, and keeping it with itself. अब मैंने ये n की वैल्यू क्या की है, एक टेम्प वेरिएबल में डाल दिया है. आई एम असाइनिंग द वैल्यू. तो अगर मैंने n को 153 लिया है तो टेम्प में क्या वैल्यू आ गई? अब इट इज गोइंग टू बी 153. Then I have a loop. Okay, there is a while loop here. I'm sure you guys know what loops are, and while loop specifically checks at the entry point the condition. तो वो entry पे ही check कर रहा है. There is another modification to while loop, which is a do while loop. Do while loop क्या करता है? The difference is that do while पहले do वाला run करता है और फिर while वाली condition check करता है. So it's an exit checking loop. While on the other hand is an entry checking loop. ठीक है, वो entry पे check कर रहा है कि if while n is greater than 0, मतलब n should be a number, proper number which is not less than 0, it should not be a negative number, तभी मैं ये जो while loop के अंदर जो मेरा instructions है वो execute करूँगा, नहीं तो मैं discard कर दूँगा. I don't want to waste my energy on any random number. ठीक है, तो अगर वो नंबर ऑथेंटिक है तो मैं क्या करूँगी? मैं पहले मॉड्यूलस करूँगी उसका 10 से. ठीक है, सो 10 से मॉड्यूलस करूँगी तो मेरा जो भी रिमाइंडर आया उसको मैंने क्या करना है? उसका क्यूब सम में ऐड करना है. सम की इनिशियल वैल्यू देखो सबसे ऊपर, इट इज 0. सो 0 प्लस whatever the cube of modulus of n is, right? And then I divide it by 10 and I perform the same operation till I get a number which is less than 0 or 0. ठीक है, तो मैं तब तक ये काम करती रहूंगी जब तक मेरा n greater than 0 रहेगा. ठीक है, अब अगर तो मेरा temp इक्वल टू सम, टेम्प में क्या था? नंबर था ना, 153 की वैल्यू देखो, 153 हमने टेम्प में डाल दी थी. अब हम चेक करेंगे जो हमारे सम की वैल्यू आई क्या वो एक्चुअली उस नंबर से इक्वल है. अगर हाँ तो इट इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर नहीं तो इट इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. नाउ यू विल से देयर इज अनदर लाइन कॉल्ड रिटर्न 0. अभी रिटर्न 0 क्यों लिखी है मैंने? डज एनीवन हैव एन आंसर टू दिस प्लीज? ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम आई टेल यू, जो हमारा मेन फंक्शन होता है ना वो काफी टाइप का होता है. ओवर हियर वी आर परफॉर्मिंग सम mathematical operations and we are working on integer type variables. इधर मैंने initially line number 2 पे देखो, मैंने अपने main को
int main लिखा है. I can write it as void main also, but I have written int main. Whenever I write int main, I have to return a value. So the value is returned if my program gets executed successfully. अगर successful execution नहीं हुई, then it will not return 0 and the compiler will know something went wrong. So there'll be an error message. Okay, so that is the reason why I need to return a number when I'm using int main. यही अगर void main में use करती हूँ पर, तो void का मतलब होता है nothing. Okay, so you don't have to return anything. Is it clear till now? I just want like someone to unmute and let me know if I'm audible and properly understandable. Yes, ma'am, you are. Yes, ma'am. Okay. I would like to take some questions related to programming. अगर किसी के पास कुछ questions है, then you can please write it in the comment box and ask me. Okay, people are still coming. I am just wondering if they've already missed like a lot of chunk of information. Any questions, guys? All right. अब क्वेश्चन आता है, someone wrote initially that I am unable to answer. प्रोग्राम तो लिख देता हूँ, so understandable. आपको एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर प्रोग्राम आया है and you're also asked to explain it. अब explain कैसे करोगे? So just now, I devoted like 10-15 minutes of my time to make you understand this simple program, right? So I think that is how you will be able to create content when it comes to programming subjects. Whenever you are given a program and you have to write the concept or the theory related to it, सबसे पहले उसका logic सोचो. Create a logic and translate it into English-like sentences. ठीक है? First you will explain what exactly the program will comprise of. So Armstrong number होता क्या है? Then मेरा logic क्या है? What are the loops that I'm using? And what is the logic in terms of program? ठीक है? And then I can draw the flow chart. I'm sure you guys know what a flow chart is. Flow chart कुछ नहीं होता, मैं सिर्फ अपने steps को एक chart में describe करती हूँ. ठीक है? So I create a flow chart and then I write the program. Okay, so that is how I convert my single program into a lot of content plus program. Okay, and then I can also explain the output. ठीक है, जैसे मैंने 153 एक नंबर लेके आउटपुट एक्सप्लेन किया. 153 by the way is an Armstrong number. वैसे तुम लोग you can take an example of a number and explain the output and create content with that also. Okay. Now, this is one question that I had seen in a lot of papers for you guys. So, अगर हम बात करें अपने प्रोग्राम की, there are a lot of functions. Functions क्या होते हैं basically? तो फंक्शन एक यूनिट होता है प्रोग्राम का जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है. ठीक है, अगर मैं कैलकुलेटर के प्रोग्राम की बात करूँ तो उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं? एडिशन का फंक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन होता है, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड सो ऑन, right? So these are small programs that are performing some operation. अब जब हम बात करें लेफ्ट साइड वाले प्रोग्राम को देखो. ओके, इट इज अ सी प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट कॉल बाय वैल्यू. चलो अभी कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को साइड में रखते हैं, समझते हैं प्रोग्राम क्या है. इट इज अ प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स. स्वैप टू नंबर्स मतलब अदला बदली करना. ठीक है, मेन में मैंने क्या किया, एक इंटीजर लिया, एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का ए और एक लिया बी. ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 20. मैंने एक फंक्शन में क्या करी हूँ, स्वैप एक्स ए कॉमा बी. दिस इज नथिंग बट आई एम डिक्लेयरिंग द फंक्शन. ठीक है, मैंने अपना फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स जो भी मैं पास करने वाली हूँ, मतलब इस फंक्शन में 2 वेरिएबल्स जाएंगे ए और बी नाम के. ठीक है, वो मैंने डिक्लेयर कर दिया. दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन मतलब मैंने डिक्लेयर किया. अभी मैं ये नहीं बता रही कि उस फंक्शन में हो क्या रहा है, मैंने सिर्फ बताया स्वैप एक्स नाम का एक फंक्शन है मेरे पास जो मैं आगे बनाऊंगी, जिसमें मेरी 2 वेरिएबल्स पास हो रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, उसके आगे मैंने अपना प्रोग्राम किया. अब एग्जैक्टली होगा क्या, आई एम मूविंग ऑन टू द कर्सर बिकॉज आई थिंक दैट विल बी इजी फॉर मी टू गिव यू द फ्लो. इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगी, मेरा प्रोसेसर जब कॉल करेगा तो कहाँ आएगा, वो इधर आएगा. दिस इज नथिंग बट फंक्शन डेफिनेशन. ये क्या था मेरा फंक्शन डिक्लेरेशन, ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है.
फंक्शन डेफिनेशन में अरे यार हमने तो ए और बी किया था, ये एक्स और वाई कहाँ से आ गए? ओके, सो ये दूसरे आर्ग्यूमेंट्स आ गए हैं। अभी हम देखेंगे कि ये दूसरे आर्ग्यूमेंट्स क्यों आए हैं, ठीक है? अब मेरा स्वॉप एक्स तो चलो ठीक है, नाम बिल्कुल सही है मेरे फंक्शन का, और हाँ 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स भी है आर्ग्यूमेंट्स में, ये भी ठीक है। सो मेरा डेक्लेरेशन मैच कर रहा है ना मेरे डेफिनेशन से, 2 वेरिएबल्स है और नाम भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इस वजह से वॉइड नाम वॉइड टाइप का डेटा रिटर्न है, तो चलो ठीक है, यू नो कोई फंक्शनैलिटी हो रही है, तो आई थिंक ये फंक्शन डेफिनेशन सही है। फिर मैंने इसके अंदर एक इंटीजर लिया टी, चलो ठीक है, लोकल इंटीजर मैंने ले लिया इस फंक्शन के लिए, कोई गलती नहीं है अभी तक। मैंने क्या किया, x की वैल्यू t में डाली। अच्छा x की वैल्यू क्या थी बाय द वे? देखो a और b मेरे क्या थे, एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है, इनकी एक्चुअल वैल्यूज क्या है, 10, 20, ठीक है। ये जो पैरामीटर्स है ये मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है, मतलब एक्चुअल वेरिएबल जो मैंने डेक्लेरेशन के टाइम पे बनाए थे, है ना। सबसे फर्स्ट कॉपी जो होती है वो एक्चुअल चीज होती है। ओके, अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 और 20, ठीक है, दैट इज व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द इनिशियल मेन फंक्शन। अब ये वैल्यू मैं पास करी हूँ कहाँ, इधर। ये कौन से वेरिएबल्स है, अगर एक्चुअल वाले ये थे, ये सेकंड कॉपी कहाँ से आ गई? दे आर कॉल्ड माय फॉर्मल पैरामीटर्स। ये लोग फॉर्मली मेरा काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सो दे आर द वंस दैट आर डूइंग माय वर्क, दे आर नॉट द एक्चुअल वंस, दे आर द फॉर्मल वंस, ठीक है। तो याद रखना, जो एक्चुअल में फर्स्ट कॉपी है वो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स है, और जो दूसरे वाले पैरामीटर्स है जो मेरा काम कर रहे हैं वो मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है, ठीक है। तो x में क्या वैल्यू होगी, a की वैल्यू आ गई विच इज 10, और y में क्या वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई विच इज 20। तो मैंने a और b की वैल्यू कॉपी कहाँ कर दी, x और y में, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब x में वैल्यू आ गई 10 और y में वैल्यू आ गई 20। मैंने क्या किया, 10 वैल्यू डाल दी t में, 20 वैल्यू डाल दी x में, मतलब x में अब 10 की जगह क्या वैल्यू हो गई, 20, और t में क्या वैल्यू थी, 10, वो मैंने वापस क्या डाल दी, y में, तो y में वैल्यू आ गई 10। हो गया स्वैप, क्या अदला बदली हुई है ना। मैंने x की वैल्यू जो थी 10 डाल दी t में, तो t में क्या वैल्यू है, 10। x में मैंने कौन सी वैल्यू डाली, y की वैल्यू, वो थी 20, तो x में क्या आ गया, 20। अब t की वैल्यू मैंने वापस डाल दी y में, t में क्या वैल्यू थी, 10, तो x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू की 10। स्वैप हो गया, स्वैप हो गया ना। x की वैल्यू पहले 10 थी, ये 20 था, अब ये 20 हो गया और ये 10 हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज? अगर डाउट है तो आपको मेरे को अभी बताना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट गेटिंग अ रिस्पॉन्स। Okay, Kshitij has just come. Can you guys tell me if it is understandable? Yes, okay. Okay. All right, I will share the PPT. That's not a problem for me. Okay, yeah, that was the syllabus. Okay. All right, so I'm presuming the yes in the later on. All right, I can explain number conversion also, but yeah, that is not the content that I have for now. Maybe in the next class, we can schedule another class for number system and conversion in which I can explain that. Okay? Okay, clear screen. Why clear screen is used? बहुत सारे लोग जानते हैं कि clear screen is nothing but to clear the screen because that's the definition. Clear screen क्या करता है? अगर मैंने ये आउटपुट मेरा ये आउटपुट आया एक बार एग्जीक्यूट करने के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा ये आउटपुट आ गया, ठीक है।
अगली बार अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करूंगी तो मेरा आउटपुट इसके नीचे आएगा. ना दिस इज एन ऑनलाइन कंपाइलर, सो दैट इज नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स. बट जो टर्बो सी या विजुअल सी होते हैं ना, उसमें अगर हम क्लियर स्क्रीन नहीं यूज करें तो ये जो है प्रीवियस आउटपुट न्यू आउटपुट के साथ आता है, विच इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग. तो हम क्लियर स्क्रीन यूज करते हैं ताकि जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है वो इरेज हो जाए और जो नया आउटपुट है सिर्फ वही हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखे. ठीक है guys, I know number conversion is a very important topic, and I would like to discuss it with you guys also, but today I just don't have the time to do that. Okay, now what have we understood by this program? कि मेरे पास एक एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं जिनमें मैं एक्चुअल वैल्यू डालती हूँ. मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं जो मेरे फंक्शन डेफिनेशन में आते हैं, और जब मैं इनकी वैल्यू पास कर रही हूँ तो ये वैल्यूज क्या हो रही है, इसमें स्टोर हो रही है. सो बेसिकली जब मैं स्वैप कर रही हूँ तो एक्स और वाई की वैल्यू तो स्वैप हो गई. क्या ए और बी की वैल्यू भी स्वैप हुई है? अगर मैं इसके बाद प्रिंट ए और प्रिंट बी करूंगी तो क्या मेरी वैल्यू 20 और 10 आएगी? नहीं, क्योंकि पास बाय वैल्यू में मैंने ये वैल्यू पास कर दी और इन कॉपीज पे काम हो रहा है. ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल्स पे काम नहीं हो रहा, एक्स और वाई पे काम हो रहा है, ए और बी पे काम नहीं हो रहा है. ओके, इस वजह से जब मैंने ए और बी को प्रिंट करवाया तो उनकी वैल्यूज 10 और 20 रही. दिस इज पास बाय वैल्यू या फिर कॉल बाय वैल्यू. जब मैं अपनी वैल्यू को पास करती हूँ टू माय फॉर्मल पैरामीटर्स और जो मेरे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती है. सो आई एम वर्किंग ऑन अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स, दैट इज कॉल बाय वैल्यू. अब आती है बात कॉल बाय रेफरेंस की. रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में हमने हमेशा देखा है कि पॉइंटर्स का काम आता है. पॉइंटर्स क्या काम करते हैं? पॉइंटर्स एड्रेस पे काम करते हैं, और अगर हम किसी के एड्रेस पे जाके काम कर रहे हैं दैट मीन्स वो काम तो परमानेंट ही हो गया ना. ठीक है, तो इधर मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर्स है ए और बी जिनकी वैल्यू सेम 10 एंड 20. अब मैं उनके एड्रेस पे जाके सी आई एम रेफरेंसिंग टू ए. एम्परसेंड ए मीन्स एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी, मतलब आई एम स्वैपिंग द कंटेंट्स व्हिच इज प्रेजेंट एट एड्रेस ऑफ ए विद एड्रेस ऑफ बी. तो एड्रेस ऑफ ए पे क्या कंटेंट है? 10, और एड्रेस ऑफ बी पे क्या कंटेंट है? 20. ठीक है, अब मैं फॉर्मल पैरामीटर्स पे जब काम कर रही हूँ, ओके, और मैं सेम प्रोसेस से एक्सचेंज कर रही हूँ, जो मैंने कॉल बाय वैल्यू से किया था वही मैं कॉल बाय रेफरेंस पे कर रही हूँ, बट आई एम वर्किंग विद पॉइंटर्स हियर. ठीक है, तो जब मैं ये स्वैप परफॉर्म करूंगी तो मेरे एड्रेस पे हो रहा है चेंजेस, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप होगी वही ए और बी की भी स्वैप हो जाएगी. यहाँ जो मेरे फॉर्मल पैरामीटर्स है वो एक्चुअल पैरामीटर्स को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, रेफरेंस का मतलब मैं एड्रेस पे जाके चेंजेस कर रही हूँ, तो इसका मतलब एक्चुअल वेरिएबल्स भी चेंज हो रहे हैं. ओके, सो यू सी द आउटपुट. यहाँ मैंने जब ए और बी की वैल्यू प्रिंट कराई तो वो भी स्वैप हो गई है. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू. Is that understood to everyone? Okay. Now let me come to your questions. I think many students have a lot of questions here. Okay, I'll tell you token. Okay, bingo. Tokens तो इधर ही है. Okay, so when we talk about our programming language, तो उसमें छोटे छोटे elements होते हैं जो हमें बताने होते हैं कंपाइलर को, ताकि कंपाइलर को मतलब समझ आए हमारी लैंग्वेज का. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हमें उसको बताना पड़ता है नो का मतलब व्हेन वी मूव आवर हेड साइडवेज, दैट मीन्स नो. तो हर चीज का कोई मतलब होता है और हमें कंपाइलर को भी ऐसे ही बताना पड़ता है. सो देयर आर अ लॉट ऑफ टोकन्स. टोकन क्या होता है? एक छोटा सा यू गेट अ टोकन विच इज नथिंग बट एन इंडिकेटर. ठीक है, एक इंडिकेटर है किसी चीज का. तो अगर आपके पास सपोज आप चाट की दुकान पे गए हो और उसने आपको येलो टोकन दिया फॉर भला पापड़ी, ग्रीन टोकन दिया फॉर गोलगप्पे. आई एम श्योर एवरीवन इज वेरी हंग्री नाउ. एनीवेज, तो
every token and the color is an indicator of something, right? If I give him a yellow token, तो मुझे दही भल्ले मिलेंगे, मुझे गोलगप्पे नहीं मिलेंगे, ठीक है? So every token has a meaning associated with it, and there are a lot of tokens that are used in C language. The first one being the keyword. Keyword क्या होते हैं? ये ना कुछ reserved words होते हैं. Reserved words मतलब कुछ वर्ड्स जिनका मतलब हम ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है हमने लाइब्रेरी में. मैंने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इंक्लूड कराते हुए बताया था ना, हम इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स. तो अगर हेडर फाइल हमने नहीं इंक्लूड की तो कैसे पता चलेगा प्रिंट एफ का क्या मतलब है या स्कैन एफ का क्या मतलब है, ठीक है? तो ये सारे हेडर फाइल्स क्या होते हैं, इनके अंदर कीवर्ड्स या फिर लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर को पता होता है, ठीक है? तो अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो टोटल हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में, 32, ठीक है? इससे ना ज़्यादा ना कम. और हर कीवर्ड का कोई मतलब होता है, जैसे ऑटो या फिर डबल इंट, पता है ना, इंट की इनका साइज जो होता है उससे डबल हो जाता है, ठीक है? इंट, लॉन्ग, इनम, फॉर, इफ, वाइल, वॉइड. हम वॉइड का मतलब थोड़ा ना बताते कंपाइलर को. अगर हम वॉइड लिखते हैं तो कंपाइलर को मतलब अपने आप ही पता चल जाता है, क्योंकि इसका मतलब कीवर्ड्स का ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, उसकी लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है? तो पहले टाइप का टोकन होता है कीवर्ड्स. फिर होते हैं आइडेंटिफायर्स. अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? ये कुछ नाम होते हैं जो हमें वेरिएबल्स या फंक्शंस या एरेज को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंट आई, ठीक है? चलो आई इंट आइडेंटिफायर हो सकता है, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है आई एंड इट हैज अ वैल्यू 4, तो हाँ, इट इज आइडेंटिफायर. तो बेसिकली दे आर यूजर डिफाइंड नेम्स. देखो सेकंड लाइन में लिखा है यूजर डिफाइन करता है इन चीजों को. कीवर्ड्स जो थे वो सिस्टम में डिफाइंड थे, वो यूजर डिफाइंड नहीं थे. आइडेंटिफायर जो है वो यूजर डिफाइन कर रहा है, और इसके ना कुछ रूल्स होते हैं, हमें बताना पड़ता है यूजर को, क्योंकि हर यूजर अलग है. सो वी हैव टू टेल द यूजर ऑन हाउ ही हैज टू राइट द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर्स, ठीक है? तो जो रूल कहता है उसमें सबसे पहला रूल है कि इट मस्ट बिगिन विद एन अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर. तो आई इज एन अल्फाबेट, सो आई वुड कंसिडर दैट it is following a rule, right? Only alphabets, numbers, underscores can be used, ठीक है? अब मैं ये नहीं लिख सकती आई डॉट जे, नो 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 नो, आई हैव टू राइट आई अंडरस्कोर जे. तो ये टोटल मिला के एक आइडेंटिफायर बन जाएगा, ठीक है? इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस. सपोज मेरे को एक वेरिएबल चाहिए फर्स्ट नेम, सो आई कांट राइट फर्स्ट स्पेस नेम. It has to be first underscore name. It can't be first dash name also. Okay, so that is like another rule कि white space का मतलब है. Now C जो compiler होता है ना, C का, वो जैसी white space देखता है ना, वो बोलता है कि चलो एक खत्म हुआ दूसरा शुरू होगा. It considers white space as an exit or a stop. Okay, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड. ऑफकोर्स आइडेंटिफायर का कीवर्ड का नाम अलग होना चाहिए ना, क्योंकि कीवर्ड का मतलब तो ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब सपोज मैं बता रही हूँ, यू नो, छोटे बच्चों के साथ अक्सर ये होता है, मम्मी बोलती है नो का मतलब नहीं, और पापा मस्ती करते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, नो जब भी होगा ना इसका मतलब आप ले लो, यू नो, टॉफी ले लो, नो का मतलब ले लो, कोई बात नहीं. सो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, यू नो. एंड चलो छोटे बच्चे के साथ तो हम ऐसे खिलवाड़ कर सकते हैं, बट when we talk about a language, we can't do something like this. We can't redefine something that is already defined. So keyword is already defined, okay? We can't use that keyword name and give it another definition as an identifier, okay? It should be up to 31 characters long. Okay, 31 characters का वैसे कोई यूज करता नहीं है, but that is something that is allowed. Okay, so maximum 31 characters is allowed to you to name your identifier. Okay, yeah, that's all about me. I just wanted to give you guys a glimpse of how we teach and how what exactly goes on when it comes to a subject like this. Let's move on to a few questions and then I'm going to end the session for you guys. All right. Okay, so there is a program here. Let me just stop presenting, if you may. All right. We discussed tokens.
Okay, so it says what will be the values of y? It is asked by Nitin Sahu. A question he's asked: what will be the value of y and z for a given value of x equal to 2, 3, 4, 5? And the following expression. Justify your answer. एक सेकेंड, नीचे दूसरा एक्सप्रेशन है और ऊपर दूसरा एक्सप्रेशन है. Okay, let me just. Okay, when you are given a question, these questions, it's better you execute and see. So it says I have a value called, it's going to be an error by the way, but let's see how. Okay, see, I run this. Okay, so what is the problem? Assignment operator टेक्निकली जो पहला नंबर है असाइन करता है, बट सी इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट लैंग्वेज. ओके, सो व्हेन देयर आर मल्टीपल वैल्यूज इट गेट्स कंफ्यूज्ड एंड इट क्रिएट्स एन एरर दैट इट इज नॉट डिक्लेयर्ड प्रॉपर्ली. Okay, so of course the error which is explained here is completely different. That's what happens with the C compiler. So it is an error that will happen if we do something like this. Okay, so whenever you're given something, a question like this, it's always good that you execute and then see what your output can be. Now of course when you are in a theoretical examination, it does not work well then. Okay, so that is the time where your practical knowledge that you've gained through your labs come into action, right? Is there more students coming? Now justify your answer, right? What is this exactly? I'm unable to get it. Can you write a proper question for this, Nitin, please? Okay, ma'am, paper कितने marks का होता है? Okay, I think Kuldeep has answered. It is for 30 marks. Okay, I'll just go on with this. Okay, so Suhani Mittal has asked me the same question, guys. ये जो नीचे वाला question है ना, एक बार can you please tell me what it exactly is? Okay, Kuldeep has asked me what about get ch. Okay, so get ch is a console input output function जो क्या करता है कि it works on my output screen. जब मैं if I talk about my प्रोग्राम, तो आउटपुट जो होता है वो एक काली सी स्क्रीन में आता है, राइट? और अगर मैं अपने कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर इनपुट करती हूँ तो वो स्क्रीन हट जाती है. आई कम बैक टू माय प्रोग्राम. ओके, सो दैट इज व्हाट गेट ch डज. इट गेट्स अ कैरेक्टर टू कम आउट ऑफ द आउटपुट स्क्रीन. Okay, so clear screen, get ch, they are all console input output functions. Yeah, so Rahul has to hold the screen, to take a character. जब तक कैरेक्टर नहीं आता तब तक वो उसे होल्ड करता है. जैसे ही कैरेक्टर इनपुट आया तो इट विल एग्जिट फ्रॉम देयर. ओके, ओके, डबल लाइन मीन्स और ऑपरेटर. और ऑपरेटर क्या करता है? इट चेक्स टू कंडीशंस. दोनों में से अगर एक भी ट्रू होती है तो इट गिव्स अ ट्रू रिस्पॉन्स. ओके, तो इधर आई जे के की कुछ वैल्यू होगी. या इट इज अ लॉजिकल और ऑपरेटर. यू राइट. Okay, Kuldeep has given another question. Int I equal to 4 equal to -1. बच्चे, कुलदीप, कैन यू लाइक रीराइट दिस क्वेश्चन? आपने इधर वेरिएबल नंबर नहीं दिया. चलो कोई भी वेरिएबल होगा. Okay, so how to predict an output? Okay, सबसे पहले you start with the initial part. Okay, guys, I'm supposed to end the session now. But before that, let me just tell you how you predict. That is like a very important question of how you predict the output of some program. You always start with your main. Okay, main से start करो और line by line हर हर इंस्ट्रक्शन को डिकोड करने की कोशिश करो. जहाँ आई आया और उसकी वैल्यू आई, उधर वैल्यू डाल दो. जहाँ जे आया वहाँ वैल्यू डाल दो. जहाँ ऑपरेटर आया ऑपरेशन परफॉर्म कर दो. लाइन बाय लाइन चलोगे तो प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा. ठीक है? All right, guys,
I have to end the session right now, and it was lovely taking a session for you guys. I hope you guys also understood as much as I tried to explain. I'll see you guys soon. Okay, bye bye. Take care. Thank you so much, ma'am, for the session. Thank you, beta. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you.